Okay, in the previous video, we were talking about the case of the maximization where all the constraints were of the type less than and equal to. And we had started with this question, a firm makes two types of furniture, chairs and tables. Like that, we had started with this in the previous video. You can check that. So now in this session, we will discuss a little bit more, but let me revise what all the things we have covered in a fast mode. First thing we have, whenever we have the question like this of the LPP, first of all, check which type of the constants do we have, right? It's a less than and equal to, and it's a maximization case. How do we know? Because in this question is saying profits are rupees 20 and 30. Both the products are processed on the three machines. The time required products is given machine. How should the manufacturer schedule its production in order to maximize the profit? Right? So this is the maximization case. So first of all, what we will do is the first step would be to formulate the problem. You will formulate the problem. And what are the things are required to be in the formulation of the LPP problem? First is the optimization things, whether it's a maximization or minimization, we will maximize, as this is the case of maximization, we will maximize Z equals to 20x plus 30y. Then second important point needs to be there subject to constraint. This maximization can happen, but which is subject to constraints of three machines were given. They have the available time on machine 1 was 36 and machine 2 was 50 and on machine 3 it was 60 only. So whatever the constraints or the things they have given you in the question, you have formulated accordingly and you get all the constraints less than and equal to. Then third important part is where non-negative restrictions means x and y is more than or equal to 0. It can be 0 or it can be more than 0. So that's the first step. First step was to formulate the problem. You have formulated the problem. These three important things are the part of your formulation. Maximization, subject to constants and non-negative restrictions. Now, the second step would be standardization of LPP. Now, how we will standardize? We standardized by introducing the slack variables. Right? Here, we have included S1 as a slack variable 1, S2, S3. These are the slack variables. Why we had to make it equal to sign? It was a less than and equal to, we make equated it. Inequalities is converted into equality by adding one of the slack variables. Right? So what we are doing is we have added S1, S2 and S3 in this solution. They are coefficients which have to be determined now also. We have added S1, S2, 3, but what's their coefficient? Because that coefficient will be impacting the objective function. As we know, Sy, which are the basic variables or the decision variables or structure variables, they have some coefficients. So in the same way, when we have added another three variables, then that needs to have some coefficient, and we need to identify that. That coefficient have to determine objective function should be modified accordingly. So we have modified the objective function, which was previously, it was like this one. So now it would be this. How? Because the coefficients may represent the cost involved is not using time hours, because they are not using the time hours. Right? So just give me a second. Yeah. So the coefficient may represent the cost involved in using the time hours. And we shall presume that the unused resources have no cost. These are the unused resources or the capacity. Slack variables or capturing unused capacity of time on machine 1, that would be S1. So like that, S2, S3, S4. Right? So we presume that unused resources have no cost. And as such, they do not affect the profits. Thus, the coefficient assigned to them would be zeros. So that's why these are the zeros. We had already discussed this in detail in the previous. So now the third step is the standard setup of the initial basic feasible solution. Right? Here, okay. This was the thing. S1, S2, S3 are amount of unused variables. M1, M2, M3 already done. Right. Now, setup of the initial basic feasible solution. How we set up the initial basic feasible solution? In this, we check N and M. N is the number of variables in the standardized form. हमारे number of variables कितने standardized form में? They were the 5 variables. What were those? X, Y,
S1, S2 and S3 in our case. है ना, हमारे पास कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables were there. And M was a number of constants in the standardization form. It was the 3 constraints were there. Right? These were the 3 constraints, 1, 2, 3. For the machine 1, 2 and 3. There were 3 constraints. So N हमारा 5 है and M is 3. Where N is more than 5, or 5 is more than 3 or N is more than M. This condition needs to be fulfilled first. Our solution may be obtained by setting N minus M. N minus M by setting N minus variables equal to 0. If we equate it equal to 0, then we can get the solution. And solving those variables and the remaining variables, we help them to solve the other variables we had already discussed. Then suppose we are saying N minus M is 5 minus 3 is 2. Then 2 variables will be made 0. How many variables will be made 0? And जिनको 0 बनाते हैं उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स, राइट? और जो रिमेनिंग वेरिएबल जो अदर वेरिएबल्स होंगे मींस 3 वेरिएबल्स वुड बी द बेसिक वेरिएबल्स, क्योंकि बेसिक वेरिएबल्स की नॉन जीरो वैल्यू आती है. एंड इन द सिंप्लेक्स मेथड ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. हम ओरिजिन मान के चलते हैं x और y को 0 पुट करके. वी पुट द जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स बेसिक डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं हमने उनको 0 पुट करते हैं. x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0. And by keeping these values in other equations, we get the value S1 36, S2 50, and S3 60. And then Z is equals to 0 by putting them. See, then this basic feasible solution is S equals to 0, Y equals to 0, S1 36, S2 50, and S3 60, and Z equals to 0. This is our basic feasible solution for the question. Now, let's start with it. We start with the first solution. हमारा initial basic feasible solution मिल गया, but we need to check whether this basic feasible solution is optimal solution or not. Right? तो Z मिल रहा है, वैसे हमें लग रहा है कि कम है. Profit, so we want it to be maximized. So we go for a maximization case. Now, how we made the table? If you remember, we discussed about this is the CJ, this is a contribution, basic variable, solution. And to understand how we created the table, go ahead. Again, I will say, go for my previous session. But as of now, I'm just simply explaining you in broader term how we have calculated the key column. When we made the table, this is X, Y, S1, S2, S3. Here we will check CJ minus JJ, net effect check करते हैं. What's the net effect? I have discussed in detail in the previous session. नेट इफेक्ट चेक करते हैं. नेट इफेक्ट हमारा इधर 20 है, ये 30 है और इधर 0 0 है. हमारे को इसमें सारे अगर हमारे नेगेटिव या 0 होते, एट द टाइम वी वुड हैव सेड वी हैव रीच्ड टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. बट इन द लास्ट रो CJ minus ZJ or the net effect, there is a positive entries. So current solution is not the optimal solution. For that I need to make the another table. Right? So, but for making the another table, the first step is to identify key column and then key row and then the key number. And we can see this is the 0, which is the contribution is also 0. Net जो हमारा profit है वो 0 है. We will check highest. What does it mean? अगर हम y को, if we bring y into the solution, right now basic variable solution is S1, S2, and S3. If I bring y into the solution, then it would contribute 30 to the profit. Net effect would be 30. If I bring x, then net effect would be 20. Which one is having the more effect? On 30 is more. So that's why I will bring 30 and this would be my key column. This would be my key column. I have highlighted or made it in a different color. Right? And then we have calculated the ratio. Another ratio how we calculate to determine which would be my departing. मैं ये कह रही हूँ मेरी y आएगा, but किसकी जगह आएगा? S1 की जगह S2, S3 किसकी जगह आने वाला है? तो दैट आई हैव टू डिसाइड कोई सा डिपार्टिंग वेरिएबल होगा, तब मेरा y एंटरिंग वेरिएबल होगा. डिपार्टिंग वेरिएबल चेक करने के लिए हम रेशियो निकालते हैं. रेशियो से इसका सोल्यूशन 36 विच विल डिवाइडेड बाय माय की कॉलम, रिस्पेक्टिव की कॉलम वैल्यू. 36 डिवाइडेड बाय 3 वुड बी 12. Here 50 divided by 2 would be 25. 60 divided by 6 would be 60 by 6 is 10. In this way, we calculate ratio. And when we check the ratio, and we'll check which one is having the
minimum. ठीक है जी? We checked for the minimum value. I think we are clear how to solve it and what does it mean, net effect वगैरह. I have done in the previous class. You can check it from there. Here we are talking about the test for optimality. We have checked for the test of optimality भाई सारे positive और CJ minus ZJ आ गए थे, उससे हमने अपना key column निकाल लिया था. Now we have to decide the key row, and for to determine the variable that will depart from the current solution, divide the entry of the solution by the corresponding positive entry of the key column, and you get the ratio column. The row with the minimum non-negative quotient is the key row. Non-negative ho or minimum ho. This is 12, 25, 10. 10 is minimum, so then this would be my key row. ठीक है? Key row number. This is my key row. And then the one which is intersecting key row और key column के साथ जो number है वो मेरा है key number. I think it's clear. Now we will derive or derivate the table 2. Understand it clearly. This all I have explained in my previous session. Now, okay, this was a table 1. Let me make you understand. Let me say this was your table W1. Okay. I will teach you how to make the W2. In case of derivation of the W2. ये 5 steps थे, 6th step would be derivation of W2. इसके लिए भी 2 steps हैं. First is transformation of key row. I will write now clearly. ठीक है? Second हम होगा transformation of non-key rows. First of all, what we are doing, we are transforming the key row. Which one is a key row? We know this one was a key row. First of all, we will transform it. And how do we transform it? It would be a simple thing. First step, it would be replace row, replace key row. Replace key row with a row labeled Y, and then entries for Y row are obtained by dividing each entry of key row by key number. And we know what is my key number, that is 6. So, and then how we will transform the non-key rows, that also I will explain. That's the first part. And the second part would be transformation of non-key rows. ठीक है? चलिए, let us start with same way. टेबल हमारी बिल्कुल ऐसी जाएगी. First thing is CJ. Basic variables, solution, then values X, Y, S1, S2, S3. I think the same, right? Then right.
then I think I've not left something. This one. Okay, it was 20. It is 30. Just give me a second. Right. चलिए. It's 20, 30. The values are 0, 0, 0. The same thing, we will make it in the same way. Now, I'm saying how we will make it. We know, first of all, in the transformation, I told you entries of the first thing, entry replace the key row with the row labeled Y. कैसे replace करोगे? यहाँ हमारा था S1, S2, S3 हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल था. डिपार्टिंग वेरिएबल के जगह जो की रो था उधर हमने Y ले दिया. राइट. नाउ वी विल राइट इज देयर कंट्रीब्यूशन. हमें मालूम है सीजे का S1 का कंट्रीब्यूशन वाज 0, S2 का कंट्रीब्यूशन वाज 0, Y कंट्रीब्यूशन वाज 30. राइट. इसका कंट्रीब्यूशन हमारा 30 था. वी गेव इट द 30 hours, rupees, जो भी कंट्रीब्यूशन है, वी हैव मेड इट 30. नाउ second part, the entries for the key row is obtained by dividing the each entry of the key row by the key number Y. हर एक रो का हर एक एलिमेंट को हमें क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड इट बाय 6. हमारे यहाँ पे 36, यहाँ पे है 60 है. इट वाज 60. वी कैन सी इट इज 60. नाउ 60 डिवाइडेड बाय द की नंबर मीन्स 60 divided by 6. It comes out to be 10. So here it would be 10. Right? Here it is 2 divided by 6. It comes out to be 1 by 3. Right? So here we will write 1 by 3. Here it is, we can see here it is 6. 6 divided by 6 is equals to 1. So we will write it here 1. In the same way, 0 divided by 6 comes out to be 0. Here, so we will write 0. In the same way, here is 0 divided by 6 comes out to be 0. And for 6, it would be 1 divided by 6. Is it clear? So it comes out to be 0 and it comes out to be 1 by 6. I think now it's very clear how we create the key row. हमने पहले की रो डिसाइड करी थी, कौन सी थी? हमें की रो डिसाइड करनी आ गया. जो की रो में जो की नंबर है हमने उससे सबको डिवाइड कर दिया. 60 डिवाइडेड बाय 6 इज 10, 2 डिवाइडेड बाय 6 इज 1 by 3, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1, 0 डिवाइडेड बाय 0 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 6 इज 0, sorry, 0 divided by 6 is 0, 1 divided by 6 is 1 by 6. I think it's very clear how we have calculated it and solved it. Now question comes for the next is the transformation of the non-key rows. अभी जो non-key rows है इधर मैं क्या लिखूँ? The 36, 50, 3, 3, 1, 0 इन सब की जगह में मुझे क्या लिखना? How we will calculate it? For that transformation we have a small formula and always remember to solve it by that, and we will not be able to make any mistake in it. It is like new non-key row equals to old non-key row. ओल्ड वाली नॉन क्यू रो से, राइट, हम न्यू नॉन की रो इक्वल्स टू ओल्ड नॉन क्यू रो, की रो माइनस वी सब्ट्रैक्ट व्हाट? की कॉलम एंट्री. जो भी हमारी की कॉलम में एंट्री आई हुई है वो वाली कॉलम एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे विद न्यू की रो. जो न्यू की रो की एंट्री होगी उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एंड वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ओल्ड नॉन की रो. सो बाय दैट वी विल गेट द न्यू नॉन की रो. हाउ? प्लीज इसको ध्यान से देख लो एक बार. हमने क्या किया है? हमने किया सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला में ये था,
हमारी ओल्ड नॉन की रो है, हम सपोज 30 का निकाल रहे हैं तो पहले हम 36 ऐसे ही रखेंगे, 36 माइनस की कॉलम एंट्री मीन्स 36 माइनस की कॉलम एंट्री कितनी है मेरी, की कॉलम एंट्री would be my 3, sorry, this 3 and that to be multiplied by new key row. अब न्यू की रो में क्या आ गया है, 10 आ गया है ना, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इसका निकालना है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फॉर दिस, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फॉर दिस S1 के लिए सोल्यूशन क्या है, और ये वाली रो निकाल रही हूँ, इस वाली रो के लिए हाउ आई विल कैलकुलेट फॉर द रो 1, रो इन प्लेस ऑफ S1 वाली रो, S1 के लिए रो, sorry, let me write it with, if I am calculating it for, एक बार मैं इसके लिए यहाँ लिख देती हूँ, मुझे फिर इसके बाद जेड जे निकालना है, देन सी जे माइनस जेड जे नेट इफेक्ट निकालना है, देन आई एम सेइंग फॉर रो S1 रो के लिए क्या होगा, आई टोल्ड यू द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कह रहा है मेरा, नॉन की रो है ना, ओल्ड नॉन की रो मेरी ये वाली, इधर क्या लिखा है, इधर 36 है, तो मैं पहले 36 लिख देती हूँ, 36 माइनस, मेरे से बोल रहे हैं की कॉलम एंट्री मतलब न्यू की रोज, की कॉलम एंट्री क्या है मेरी, कितनी है की कॉलम एंट्री, की कॉलम एंट्री इज 3, की कॉलम एंट्री ये रही, मैं 30 इसके लिए निकाल रही हूँ, तो पहले ओल्ड में मेरा 36 था, 36 लिखा, मेरा की कॉलम जो था उसमें क्या लिखा है, 3 लिखा है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, और इधर इसके प्लेस में जो नया वाला आया है, ये न्यू की जो रो बनी है मेरी, है ना, न्यू की रो बनी है, तो न्यू की रो के अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये वाला 10, तो दैट्स व्हाई आई रोट इट 10, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 6, right? Then I will write 6 here, ये रहा मेरा 6, ठीक है, देन इसी जगह इसी के लिए मैं निकालती हूँ, मेरा इधर के लिए कितना है, ये वाला, ये इसके लिए मेरा हो गया 30, इधर मेरा पहले कितना था 3, ये 3 माइनस 3, दिस 3 नीड्स टू बी मल्टीप्लाई विद द कॉरेस्पॉन्डिंग, नहीं ये वाला, हाँ ये 3 माइनस इस वाले 3 से, एंड विच नीड्स टू बी मल्टीप्लाई बाय दिस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स के, क्योंकि मैं इसके लिए निकाल रही हूँ, है ना, तो मेरी वैल्यूज क्या आ गई, मुझे एक्स के नीचे वाली वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, इधर मेरे पहले क्या लिखा हुआ है, 3 है, दिस वन 3 लिखा हुआ है, आई विल कैलकुलेट 3 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, मल्टीप्लाई न्यू वाली से 1/3 है, इट कम्स आउट टू बी 2, ठीक है, मेरा यहाँ आ गया 2, अब मैं y वाली के कॉरस्पॉन्ड y और S1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ निकाल रही हूँ, इधर मेरे लिए मेरा पहले पुराना कितना है, 3 है, 3 माइनस, अब मुझे उसका कॉरस्पॉन्डिंग तो की रो खुद ही है 3, मल्टीप्लाई बाय इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो मेरा आंसर 0 आएगा, इधर आ गया 0, इधर S1 के लिए इधर क्या था, मेरी वैल्यू थी 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 कम्स आउट टू बी 1, तो मेरा इधर 1 आ जाएगा, ठीक है, मेरे टेबल 2 में 1 कैसे आया, क्लियर हुआ, इसी तरीके से मैं इसका देख रही हूँ, इस वाले S2 के लिए 0 है, 0 माइनस इधर 3 मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी न्यू वाली 0 आई हुई है, 0, तो हमारा आंसर 0 ही है, नो वरीज। नाउ S3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग मेरा 0 था, ओल्ड वाला, ओल्ड माइनस आपके न्यू वाले 3 में कितना है, 3 था ये, और ये कॉरस्पॉन्डिंग की रो में 3 था, और ये इसकी वैल्यू है 1/6, तो हमारा आंसर आ गया हाफ, दैट वुड बी माइनस हाफ, इज इट क्लियर, minus half. Now, we will calculate it for further for row
रो S2 के लिए, क्योंकि ये भी मेरी ओल्ड रो है। ओल्ड रो में S2 में कितना है 50, यू कैन सी इज 50 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग टू मल्टीप्लाई उसके पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। नाउ अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी। हाउ वी व्हाट वी विल डू इज वी विल से रो S2 में ओल्ड है हमारा 50 माइनस उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू मल्टीप्लाई हमारा उसके नीचे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में 50, हमारा आंसर आ गया 30, इट वुड बी 30। In the same way, it would be 50 minus, sorry, not 50, it's a 5, क्योंकि हमारा 5 है यहाँ पे, we can see this is 5, फिर हम 2 के लिए निकालेंगे 0 1 0, right? तो now we are calculating for the 5 था, माइनस हमारा उसको corresponding 2 ही होगा, और ये 1/3 है, we can see, ये हमारा आ गया 5 1/3, तो 13/3। In the same way, we will calculate for the column y, for the column y it was 2, हम देख सकते हैं 2 था ये कॉलम, इसके लिए 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0, then 0 minus 2 multiplied by 0 comes out to be 0, then 1 minus 2 multiplied by 0 is 0। I think it's clear now हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 2 multiplied by 1/6, ये क्योंकि 1/6 है हम इसके लिए निकाल रहे हैं, we get the value minus 1/3। So I'm putting these values whatever I've calculated here, 13/3, here I will, it would be 0, would be 0, it would, यहाँ गलती करी क्या कोई, हाँ 2 minus is 1 ना, sorry I was written, it was 1, 1 minus 2001, it is 1, it is half 1/3। I think it's clear। अब हमारे को कितनी क्लैरिटी आ गई है कि we are able to calculate the values। This was the important part of the table। The students make the mistake over here only in the calculation, but now I think it's clear how to create the tables, how we do the transformation of the key rows, transformation of the key rows, and the transformation of the non-key rows, right? Now it's easy. In the same way we will solve it. Now we know we will calculate the ZZ. ZZ again would be the same, 6 multiplied by 0 plus 30 multiplied by 0 is 0, and 10 multiplied by 30 is 300. So our Z comes out to be 300. Is it clear? Sir, and in this case also 2 multiplied by 0, this multiplied by 0, this is multiplied by 10 is 10. It is 0, 0, 30. 1 multiplied by 0, 0 multiplied by 0 plus 0 multiplied by 30 is 0. 0 multiplied by 0 plus 1 multiplied by 0 is 0. 0 multiplied by 30 is 0. Here, minus half multiplied by 0, minus 1/3 is multiplied by 0, 0, plus 1/6 multiplied by 30 comes out to be 5. Right? That was the value. Now the net effect Cj minus Zj, it would be, we will calculate it from here. It would be 20 minus 10 would be 10, 30 minus 30 would be 0, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, so 0 minus 0 would be 0, and here 0 minus 5 would be minus 5. What was this? Sorry. ठीक है जी, so it's very clear. हमारा we have not received the optimal solution. Why? Because few of the values in the Cj minus Zj are 0 and positive. If something is high as positive, that would be the entering variable, and we will make the, this would be my entering variable, means x would be my entering variable, और ये मेरा क्या है, key column। I think it's clear. This is my key column. Now we will calculate it for the ratio. Ratio column के लिए same way
Solution variable 6 divided by 2 will be 3. Here it would be 30 divided by 13 by 3. Solve it, you will get 90 by 13. Right? Here 10 divided by 1 by 3. It would be 30. So which one is the minimum here? 3 is the minimum. So S1 would be my departing variable. ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, मुझे प्रॉफिट 300 का हो गया है. I got the better profit than the previous one. Previously it was only the 0. Right? Now I have the 300. But still there is a chances of increasing. हमारा भी 30 दिखा रहा है. 30 वो x में 10 दिखा रहा है. Means अगर मैं 1 unit of x I am entering to the solution, there will be a benefit of 10 units into the profit. Right? So that's the thing. So I need to go for the next table. हमें और इसमें क्या क्लियर हो गया? हमारा एंटरिंग वेरिएबल क्लियर है और डिपार्टिंग वेरिएबल भी क्लियर है. एंटरिंग वेरिएबल मेरा क्या है? x और डिपार्टिंग वेरिएबल इज s1. ये s1 निकलेगा और x एंट्री करेगा. एंड द सेम वे वी विल मेक द टेबल. आई थिंक इज क्लियर. हम टेबल 3 बना लेते हैं फटाफट. आई एम रबिंग दिस सो दैट हम यहीं पे नीचे बना लें सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हम एग्जाम में चाहें तो इसको एक ही पेज पे टेबल्स बनाएं. हम इस तरह से काम करें पेपर्स में. जो पेपर में होगा ये जिस तरह से जो पेपर होता है हमारा 2 पार्ट्स में. पेपर 1 है, इसको ओपन करके मेक इट वन साइड एंड अनदर साइड. मेक द रफ वर्क वेयर, मेक द टेबल्स हेयर. ये एक पेज को हाफ मत करना. जो बीच के पेजेस होते हैं तो बोथ साइड, इधर पेज नंबर आपका 2 और ये पेज नंबर 3. 2 पेज और 3 नंबर पे काम करना. जैसे कि आपका ये और यहाँ आ जाए, या जैसे आपके 2 और 3 है तो इजी हो जाता है आपके लिए. ठीक है. 3 पे आपने राइटिंग पार्ट या सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया एंड 2 में मेक ऑल द टेबल्स. टेबल 1 2 3, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता टेबल बनाने में. अब मैं आपको यही टेबल दोबारा से बना लेते हैं. आपको क्या चाहिए? सीजे चाहिए, बेसिक वेरिएबल्स, सॉल्यूशन, आपके x y s1 s2 s3. इनकी वैल्यू 20 थी, 30 0 0 0. एंड नाउ बेसिक वेरिएबल्स आपके, एक मिनट लाइन खींच लेते हैं, इजी हो जाता है. आपके यहाँ आपको पता है कि अब हमारा S1 जा रहा है. S1 की जगह कौन आ रहा है? S1 की जगह हमारा आ रहा है x. x वुड बी मैं ये x, ये S2 ऐसे ही रहेगा, ये y ऐसे ही रहेंगे. इनकी कंट्रीब्यूशन क्या था? 10 था, इनका 0, इनका 30. आपने ऐसे बनाना है. अब आपको मालूम है इसके अंदर फिर से वही सॉल्व करना है सारी वैल्यूज. आपको कैसे सॉल्व करेगी? पहले आपका जो की रो थी, दिस वाज द की रो. अब की रो के अंदर की नंबर कौन सा था? ये वाला है ना. आपका की नंबर ये है. ठीक है. अब की नंबर से ही आपको डिवाइड करना है सारा. तो आपका क्या आ गया? 6 डिवाइडेड बाय 2. इधर 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 divided by 2, 1 divided by 2, 0 divided by 2, half divided by 2. Right? So by that you will get all the values. Like 6 divided by 2 would be 3. 2 divided by 2 would be 1. It would be 0 divided by 2, 0. 1 divided by 2 would be half. 0 divided by 2 would be 0. And half divided by 2 would be minus 1 by 4. Right? So in the same way we got the जो टेबल हमारी की रो है, वी गॉट द न्यू की रो. नाउ वी हैव टू गेट द अदर रोज आल्सो. अदर रोज के लिए हमें वी ऑल नो कैसे सॉल्व करना है. सपोज वी आर सेइंग 30 माइनस आपका की रो जो भी आपके उधर कॉरेस्पॉन्डिंग रो में क्या है? 13/3 कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में 13/3 मल्टीप्लाई बाय द न्यू की. न्यू की में क्या बनी है आपकी? 3 बना है, तो आपने 3 लिखा है. न्यू गॉट द आंसर 17. ठीक है. फिर आपने क्या किया?
इधर पहले तो आपने यहाँ 17 लिख दिया। देन फॉर x के लिए आपका ओल्ड वाले में कितना है 13/3 माइनस ई वाला भी 13/3 और माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 यू गेट द वैल्यू 0। तो आपका इधर आ गया 0। इधर क्या है आपका 1 माइनस, ये आपका 1 है ना, आप y के लिए निकाल रहे हो। नहीं, एक मिनट, हम 0 के लिए निकाल रहे हैं, नॉट 1 के लिए। या कैलकुलेटिंग इट फॉर 0। ठीक है, ये 0 y के लिए 0 है, तो 0 माइनस 13/3 मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग में कितना है 0 है, तो हमारा आंसर इधर 0, ये भी 0। इन द सेम वे आप दूसरे के लिए भी ऐसे करोगे, ये भी हमारा 0 है, 0 माइनस 13/3, ये भी मेरा 0 हो ही जाएगा। अब इसका देखते हैं 1 के लिए, 1 माइनस 13/3 मल्टीप्लाई बाय हाफ माइनस 13/3। आप इससे सॉल्व कर लो सबके लिए, तो आपका आ जाएगा, इजी है। 0 17 0 0 नहीं, एक मिनट, 2 बार 0 आ चुका है, 2 टाइम। ये तो हमारा माइनस 13/6, 13/6 यही निकाला था। ये मेरा है 1, इधर आप सॉल्व कर लोगे, आपका आएगा 3/4। आई सॉल्व दैम सेपरेटली सो दैट यू कैन, इट्स इजी फॉर यू नाउ। इज इट क्लियर? अब मैं इसके लिए भी, अब y वाले कॉलम के लिए हमारे पहले वैल्यूज कितनी है 10, 10 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग 1/3 मल्टीप्लाई बाय उसके न्यू वाली 3 थी, वी विल गेट द वैल्यू 9। इधर है 1/3, आप देख रहे हैं, आप इसके लिए निकाल रही हूँ 1/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, कम से कम 0, ऐसी 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस, ये आ गया 1, इधर आ गया 0 माइनस 1/3 हाफ इक्वल्स टू 1/6। इसको आप सॉल्व कर लेना अपने आप, आपका इजीली होता जाएगा। ये रो y के लिए मैंने निकाला है, ठीक है। इधर वैल्यूज आ रही हैं आपकी 9 0 1 1/6 0 1/4। आप सॉल्व करोगे, आपको इजीली आपका हो जाएगा ये।